much running time it will be to search one element normal array में? नॉर्मल array में n होगा log n क्यों? n no अरे for to compare 213 in this normal array I have to compare with each element. linear search में. A linear search, no, this is the order of n time. Understand, no? अरे yes sir तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं एक हैश फंक्शन यूज करूंगा. तो लेट अस कंसीडर वन हैश फंक्शन. सपोज मॉडुलस 100. तो कोई भी की वैल्यू एच की इज इक्वल टू की मॉडुलस 100. तो की मॉडुलस 100 का रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी द रेंज? 0 to 99. सो मतलब कोई भी की वैल्यू ले लो, उसके ऊपर अगर हम लोग ये मॉडुलस ये हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, देन आई विल गेट ए नंबर विच इज बिटवीन 0 to 99. तो मैं क्या करूंगा, तो सपोज मेरा 213 के ऊपर आई विल डिवाइड और आई विल अप्लाई मॉडुलस 100, देन आई विल गेट 13. तो मैं क्या करूंगा, ये 13th लोकेशन में जाऊंगा. यहाँ पर सपोज दिस इज रिटन 13. तो आई विल गो टू 13 एंड 13 में क्या होगा, एक लिंक लिस्ट होगा. यहाँ पर देयर विल बी लिंक लिस्ट लाइक दिस. यहाँ पर दिस विल, यहाँ पर इट विल बी रिटन 213. okay, and the pointer will point to this. are you getting? and अगर और कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर सपोज मेरा 313 इज ए नंबर, एंड अगर 313 के ऊपर मॉडुलस 100 करूंगा, देन कितना आएगा? 13. सो दैट 13 हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, इस लिंक लिस्ट में और एक नोड ऐड कर देंगे. आई विल ऐड लाइक दिस. आर यू गेटिंग? तो मतलब ये जो अरे है, दिस अरे विल कंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस और फर्स्ट नोड का, ये हर एक लिंक लिस्ट का एड्रेस. तो कोई भी एलिमेंट को अगर तुम्हें सर्च करना है, तो पहले उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करो and go to that linked list and search that element in that linked list. Understood this idea? Yes, sir. Anybody? Yes, sir. Any question? If you are not getting, please ask me. Okay, so that is actually hashing. So in this, तुम लोग डायरेक्टली 13th लोकेशन में जाके सर्च करोगे. यू डोंट हैव टू सर्च द एंटायर आरे. ओके, ये जो लिंक लिस्ट होगा उसका साइज कम होगा इन कंपैरिजन टू द होल आरे. तो यू हैव टू सर्च इन दैट लिंक लिस्ट, दैट इज अ स्मॉलर लिस्ट इन कंपैरिजन टू द लार्जर आरे. ओके, तो दैट टेक्निक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी लॉजिकल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस है, तो वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. वन इज पेज, अनदर वन इज पेज नंबर एंड अनदर वन इज ऑफसेट. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेज नंबर के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद दिस इज जस्ट लाइक द अरे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. दिस इज जस्ट लाइक द अरे व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड. तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को कैसे समझाया, ये लिंक लिस्ट में, ये लिंक लिस्ट में हर एक नोड में कितना एलिमेंट रख रहे थे हम लोग? 2 एलिमेंट. बट यहाँ पर 3 एलिमेंट होगा. 3 एलिमेंट क्या होगा? वट एवर द पेज नंबर यू आर सर्चिंग and what is its corresponding frame number, and then pointer to the next node. This is one node. Try to understand. This is one node. This is another node. So देखो ये pointer point कर रहा है next node को. This is pointing to the next node. Okay. So यहाँ पर ये जो link list है, this will contain, or each node will contain 3 items. One is page number, another one is frame number, another one is pointed to the next node. तो कोई भी लॉजिकल पेज होगा उसके ऊपर हम लोग हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा, सपोज यू विल गेट 13, तो डायरेक्टली ये जो हैश टेबल में 13th लोकेशन में जाओ
and in that linked list you search this P. तो कोई भी नोड में P मिलेगा, then उसका corresponding value is the frame number of the physical memory. Are you getting? Yes, sir. So suppose in this example I am searching for P. So पहले P के ऊपर मैं हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा h of P. तो h of P अप्लाई करने के बाद सपोज मुझे मिला K. So suppose I got this value is suppose K. Then मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ये kth लोकेशन में जाऊंगा. इस सारे में kth लोकेशन में जो लिंक लिस्ट होगा वहां पर मैं P को सर्च करूंगा. So I will not find here. I will go to the next node and I will find here. So P का next value is R. Then R is actually the base address of the or frame number of the. So matlab this is the R value. This value is R actually. This is R. Okay. And in that page D is the offset. matlab after यहाँ से suppose इतना D है. So after D bytes you will get your data here. Is this clear? Yes, sir. So the virtual, Yes, sir. so the same thing is explained over here. Each element contains the virtual page number, the value of the mapped page frame, and a pointer to the next. So this is talking about each element of this linked list, this one. Okay. And पहले virtual page number is hashed into a page table. So ये hash use कर रहे हैं. And the virtual page numbers are compared. So we will compare the page table in this. So that's explained. Okay, should I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Next is inverted page table. देखो, for each process, how many page tables are kept in the memory? हर एक प्रोसेस के लिए, मतलब हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल होता है या सब प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल होता है? What do you know till now? सर हर एक के लिए एक. हर एक के लिए एक होता है. मतलब suppose there are 5 processes currently running. So how many page tables will be there? 5 or 1? 5. 5. Okay. So मतलब क्या होगा? Whenever you are referring to the address of a particular process, then that corresponding process का page table हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा. So अगर at a time 50 प्रोसेस चल रहा है तो 50 पेज टेबल मैनेज करना पड़ेगा. So without doing this, देखो these 50 processes की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मैक्सिमम कितना होगा टोटल? सपोज एट ए टाइम 50 प्रोसेसेस आर रनिंग. ओके, देन ये जो 50 प्रोसेस व्हाट एवर पेजेस दे आर रिक्वेस्टिंग और व्हाट एवर एड्रेसेस दे आर रिक्वेस्टिंग, that address should be there in the physical memory. Assume that that address is there. So that means ये physical memory में जितने क्या है नंबर ऑफ पेजेस है, ये सब पेज टेबल में मैक्सिमम उतना रिकॉर्ड होगा, उससे ज्यादा होगा क्या? नहीं सर. नहीं, उससे मतलब मैक्सिमम उतना ही होगा. तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस क्रिएट वन पेज टेबल. ओके, तो सब प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल करते हैं. तो एक ही पेज टेबल में कितना रिकॉर्ड होगा? कैन यू टेल मी टोटल हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर? नंबर ऑफ पेजेस इन आवर फिजिकल मेमोरी. अरे ये पेज टेबल क्या स्टोर करता है? पेज टेबल स्टोर्स द फ्रेम नंबर ऑफ द फिजिकल मेमोरी वेयर द पेज व्हाटएवर आई एम रिक्वेस्टिंग it is present in which frame? अरे yes or no? Yes, sir. So what we will do, हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर फिजिकल मेमोरी में मान लो कि सपोज 100 पेजेस आर देयर. तो ये जो पेज टेबल है, देखो यहाँ पर देखो, ये जो पेज टेबल ये वाला, तो यहाँ पर मेरा 100 रिकॉर्ड्स होगा. ओके, तो इट में हैपन दैट सपोज दिस इज द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, लाइक दैट. तो सपोज फर्स्ट पेज में प्रोसेस 2 का पेज स्टोर हुआ है. प्रोसेस 2 का पेज नंबर सपोज P2 एंड पेज नंबर सपोज 3. सेकेंड पेज में प्रोसेस
1 का पेज नंबर 100 स्टोर हुआ है। थर्ड प्रोसेस 5 पेज नंबर 2, दिस विल बी लाइक दिस। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये जो पेज टेबल में क्या स्टोर करेंगे, पेज टेबल में हम लोग स्टोर करेंगे कि प्रोसेस आईडी, फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट प्रोसेस P2, process ID is P2, then the page number, logical page number, then उसका corresponding frame number is suppose this is my corresponding frame number is suppose, so the logical page number is 3, corresponding page number is suppose my 0, this is 0, this is 0, this is 1, this is 2, like that। सेकेंड वन क्या स्टोर करेंगे, प्रोसेस आईडी 1, which पेज 100 पेज, प्रेजेंट इन which फिजिकल मेमोरी 1। थर्ड प्रोसेस नंबर 5, प्रेजेंट इन 2 एंड व्हाट इज द पेज नंबर इज ऑल्सो 2। ये समझ में आ रहा है? Yes sir, yes. दिस इज एक्चुअली द पेज टेबल कंटेंट्स। तो पेज टेबल में हम लोग देखो, इधर में एग्जाम्पल में तुम लोगों को क्या बताया, 2, 3, 0 ये सब बताया, बट एक्चुअली ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर वी विल नॉट स्टोर। कैन यू टेल मी व्हाई these values we will not store? We will store only these values in the page table. Can you tell me why? Because It's already the form of array. because these values are indexes, that Yes. automatically we will get it. So only we will store the PID and the page number of the logical address. Okay, तो यहाँ पर देखो CPU जो एड्रेस जनरेट करेगा उसका 3 पार्ट होगा। ओके, एक्चुअली CPU जो एड्रेस जनरेट करेगा तो CPU will generate for which process, that is process ID, then this पेज नंबर, देन द ऑफसेट। तो हम लोग ये दोनों लेके यहाँ जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ सर्च करने के बाद सपोज हम लोगों को ये दिस PID एंड P वी गॉट एट द 53, ये पेज टेबल में 53 लोकेशन में हम लोगों को मिल गया। देन आवर आई हियर इज 53। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फिजिकल मेमोरी में 53 लोकेशन में यू विल गेट योर डाटा, और 53 फ्रेम में यू विल गेट दिस कॉरेस्पॉन्डिंग पेज एंड ऑफसेट यू नो ऑलरेडी डी वैल्यू, सो दैट डी यूज करके हम लोग यहाँ डाटा विल गेट इट। इज दिस क्लियर? Yes sir. Okay, so you read this, the same thing is written over here in this slide, nothing more to explain. Actually I have already explained you whatever, you read by yourself. Okay, so पेजिंग में कौन सा सेगमेंटेशन होने का, फ्रैगमेंटेशन होने का चांसेस है? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो देखो प्रॉब्लम्स इन पेजिंग में फर्स्ट इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन एट द लास्ट पेज ऑफ द प्रोसेस। लास्ट पेज में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा या कोई भी पेज में हो सकता है? सोच के बताओ, ऐसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बताओ, थिंक ऑन दिस एंड टेल मी। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन will be always in the last page of a process, or it can be any page of the process. Tell me, simple question. अरे what happened? So only last पेज आएगा। ओनली हाँ, लास्ट last पेज page। में होगा ना। हर एक पेज में सपोज मेरा पेज साइज इज 1000, ओके, एंड सपोज मेरा एड्रेस इज 2356। तो फर्स्ट दो पेज 100 बाइट्स यूज करेगा, लास्ट पेज 356 यूज करेगा। सो आउट ऑफ द 100 बाइट्स ओनली 356 विल बी यूज्ड, द रिमेनिंग 1000 minus 356
will not be used. So that is internal fragmentation. Okay, so every time last page में होगा. And another thing is difficult to share the program and data between processes, such as if the procedure P1 and P2 are on the same page, we cannot set a read permission to one and the while write permission to the other. For example, suppose दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस कोई एक पेज को यूज कर रहे हैं. ओके, तो हम लोग शेयर्ड पेजिंग तुम लोग को लास्ट क्लास में समझाया था. सो वी कैन यूज द शेयर्ड पेजिंग. तो शेयर्ड पेजिंग अगर दोनों प्रोसेस यूज करेंगे तो either you have to allow both the processes read permission or none of the processes write permission. But एक प्रोसेस को रीड एक प्रोसेस को राइट, that is not possible. Okay, so but our main concern here is पेजिंग में क्या है, पेजिंग में मेन कंसर्न इज सपोज योर that is not written over in this slide, but that is suppose your program, and program में क्या होता है, program में suppose you have written a C program, so there is a main part, then you have called suppose 5 functions, तो बहुत सारा functions कॉल हुआ है, तो मतलब हर एक function is one unit. Okay, main is one unit, each function is one unit. Then we have like some objects in Java or in object oriented programming, it is objects, or you may have some local variables stored, global variables stored. Okay, so these are actually one logical unit. Okay, so what we want actually, we want these units should be placed together. समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग मेन पार्ट का जो कोड है, तो मेन पार्ट सपोज इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पेजेस, तो 3 पेजेस तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में नहीं रहेगा या रहेगा? क्या लग रहा है तुम लोग? अरे पता नहीं रहेगा सर. नहीं भी रह सकता है, मतलब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वी डोंट नो दैट. सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग आवर कोड इनटू नंबर ऑफ पेजेस, देन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक पेज में मेन का कुछ पार्ट रह जाएगा और एक फंक्शन का भी कुछ पार्ट रह जाएगा. अरे दिस कैन हैपन और नॉट? यस सर. तो बट सपोज मुझे मतलब इफ आई विल गेट दैट टाइप ऑफ थिंग, देन मुझे मेन का हर एक कोड दैट आई विल नॉट गेट इट इन द वन लोकेशन. तो मुझे ये जरूरत, व्हाट इज द नीड? सपोज आई डोंट वांट टू अलाउ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू मॉडिफाई दिस मेथड and I may allow some other object to modify this method, so that I cannot do. और फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पेज में 2 फंक्शन का पार्ट रह गया, तो मुझे सपोज एक फंक्शन को राइट करने के लिए अलाउ करना है, दूसरे को अलाउ नहीं करना है, सो दैट आई कैन नॉट डू. ओके, तो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, वी वांट दैट लॉजिकल मॉड्यूल शुड बी प्लेस्ड इन वन लोकेशन. Okay, so that is the requirement, and for that we are going for segmentation. So it is a memory management scheme that supports user view of memory. User view of memory मतलब यूजर को क्या चाहिए, सपोज यूजर को चाहिए उसका जो सब रूटीन है वो एक जगह रहना चाहिए, उसका जो सिंबल टेबल है दैट शुड बी प्लेस्ड इन वन प्लेस. If there is a main program, that should be placed in one place. If there is a function square root is used, that should be placed in one place. So I want that. I don't want that एक पेज में स्टैक का मेन का कुछ पार्ट रहेगा, स्क्वायर रूट का कुछ पार्ट रहेगा, दूसरा पेज में सब रूटीन का कुछ रहेगा, सिंबल टेबल का कुछ रहेगा. दैट आई डोंट वांट. आई वांट द यूजर व्यू. यूजर व्यू मतलब यूजर को जो लग रहा है दिस इज ए लॉजिकल यूनिट, so these logical units I want to keep it in one place. Okay, so program is a collection of segments and a segment is a logical unit. So these are the example of logical units: main, procedure, method, object, local variables. So these items I want keep it in one place. तो ये एक जगह रखने से क्या होगा, एक जगह रखने से I can apply either read or write permission for the entire code, or क्या, when during execution normally what will happen, whenever a square root function will be executed, तो square root का code one line by one line it will be executed.
normally. Okay, so if that will be present in one location, then execution will be faster. तो एक बार स्क्वायर रूट वाला कोड लोड हो गया, then I can execute. Okay, I don't have to search the next instruction present in which location. I don't have to search. Okay, you understood now what is what I am talking? Yes, sir. So उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फिजिकल जो मेमोरी है, पेजिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, पेजिंग में हम लोग उसको सेम साइज में डिवाइड कर रहे थे. ओके, तो यहाँ पर हम लोग सेम साइज में मेमोरी को डिवाइड नहीं करेंगे. वी विल डिवाइड द मेमोरी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम व्हाट वी वांट टू एग्जीक्यूट. कोई भी प्रोसेस जिसको हम लोग रन करना चाहते हैं, हम लोग देखेंगे उसमें कितना यूनिट्स है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस लेफ्ट साइड, दिस इज ए प्रोग्राम और प्रोसेस आई वांट टू लोड. उसका 4 यूनिट है, 4 लॉजिकल यूनिट्स, 1 2 3 4. मान लो कि 1 इज मेन, 2 इज ए फंक्शन कॉल, 3 is the variables, 4 is something else. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फिजिकल मेमोरी को पूरा एक जगह 1 का कोड रखेंगे, और एक जगह 2 का कोड रखेंगे, और एक जगह 3 का, और एक जगह 4 का. ओके, सो इसलिए ये जो 1 2 3 4 दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. तो हम लोग को मेमोरी को वी हैव टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट साइजेस, बट दीज साइजेस आर सेम एज द साइजेस ऑफ दिस लॉजिकल यूनिट. आर यू गेटिंग? दीज आर होल्स, ये होल्स है, यहाँ पर कुछ डाटा है नहीं, बट 1 2 3 4 द डाटा इज प्रेजेंट. इज दिस और am I able to make you understand what this segmentation? सर मतलब सर ये वन प्रोसेस का जितना स्पेस होगा उतना ही स्पेस ये फिजिकल मेमोरी में वन के लिए होगी. हाँ, दिस इज, यहाँ पर एक ही एग्जांपल मैंने दिखाया हूँ, बट सपोज मान लो कि 5 प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो 5 प्रोसेस का, जैसे फर्स्ट प्रोसेस का 4 लॉजिकल यूनिट है, सिमिलरली सेकंड प्रोसेस का सपोज 5 लॉजिकल यूनिट है, थर्ड प्रोसेस का सपोज 10 लॉजिकल यूनिट है, तो 4 + 5 + 10. So these data or these segments will be stored in the memory consecutively, एक जगह रहेगी. समझ रहे हो कि नहीं? एक जगह मतलब एक एक लॉजिकल यूनिट एक ही स्पेस में रहेगा. उसको पार्ट पार्ट करके जैसे हम लोग पेज डिवाइड करके रख रहे थे, वैसा नहीं चाहिए हमें. Yes, yes. सो व्हाट विल हैपन? अच्छा, पेजिंग में हर एक पेज का साइज कितना था? सेम था. यस सर. यहाँ पर इसको बोलते हैं सेगमेंट. दिस इज नोन एज 1 सेगमेंट, दिस इज नोन एज 1 सेगमेंट. तो हर एक सेगमेंट का साइज सेम है या अलग है? अलग अलग है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द लॉजिकल यूनिट. साइज ऑफ द लॉजिकल यूनिट. गुड. सो यहाँ पर देखो, पेजिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग सपोज देखो, पेजिंग में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम लोग इक्वल साइज में डिवाइड कर रहे थे, उसको बोलते हैं पेज. एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस को हम लोग इक्वल साइड में डिवाइड कर रहे थे, उसका क्या बोलते थे बताओ? फ्रेम्स. फ्रेम. ओके, तो जब हम सीपीयू वाज जनरेटिंग लॉजिकल एड्रेस, हम लोग वहां से पेज निकाल के वो कौन सा फ्रेम में है हम लोग उसको पहले वी वर फाइंडिंग. तो वी वर फाइंडिंग बाय यूजिंग व्हाट? पेज टेबल. पेज टेबल. तो उसको बोलते थे पेज टेबल. मतलब पेज टेबल में हम लोग कोई भी पेज का कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम हम लोग फाइंड करते थे. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कोई भी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेज नहीं, यहाँ पर ये सेगमेंट. सो दैट सेगमेंट इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द मेमोरी, वी हैव टू फाइंड दिस. तो उसको करने के लिए हम लोग को चाहिए, जैसे वहां पर पेज नंबर एंड ऑफसेट हो रहा था, यहाँ पर होगा सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट. The segmentation is a paging with variable page size. So segmentation is just like paging with variable page size. So logical address will be consisting of 2 items. One is segment number and another one is offset. So in paging, user specifies a single address which is partitioned by hardware unit into a page number and offset. तो पेजिंग में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, पेज नंबर एंड ऑफसेट. नॉर्मली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था. So now what it will do, this देखो, normally the compiler automatically construct this segment. तो ये segment who will decide
कंपाइलर, क्योंकि जब प्रोग्राम रन होगा दैट टाइम प्रोग्राम का साइज देख के सेगमेंट का साइज डिसाइड होगा. ओके, so the compiler will do this. Please remember, mark clearly this point. So there will be segment table and this will maps two-dimensional address into one-dimensional physical address. Okay, two-dimensional मतलब ये segment number and offset को वो एक one-dimensional it will find out to find the exact address. So each table entry, तो segment table का इस table entry में क्या रहेगा? एक रहेगा base and another one is limit. Base specifies the starting physical address and limit specifies the size. देखो पेज टेबल में हम लोग लिमिट स्टोर नहीं कर रहे थे. क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सेम लेंथ है ना सबका. सेम लेंथ है, सो वी वर नॉट डूइंग. बट यहाँ पर अलग साइज है, इसलिए हम लोग को लिमिट स्टोर करना पड़ेगा. तो सेगमेंट, सो देयर विल बी, जैसे वहां पर पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर होता था, यहाँ पर देयर विल बी सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर. एंड वहां पर जैसे पेज टेबल लेंथ रजिस्टर हो रहा था, यहाँ पर सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर होगा. ओके, एंड कोई भी एक सेगमेंट नंबर इट इज लीगल if it is less than segment table less register value. Okay, to understand this you see this next diagram, you will understand. देखो CPU will generate one address S and D, segment number and offset. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेगमेंट टेबल में हम लोग ये S को सर्च करेंगे. सो सर्च नहीं करेंगे, सो डायरेक्टली विल गो टू दैट आफ्टर S. माना सपोज S का वैल्यू सपोज मान लो इट इज 10 एंड दिस इज सपोज 7. तो इन द सेगमेंट टेबल यू गो टू द 10th लोकेशन. 10th लोकेशन में तुम्हें दो चीज मिलेगा, वन इज लिमिट, अनदर वन इज बेस. ये बेस क्या है? बेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस. ओके, सपोज दिस इज ए सेगमेंट वट एवर यू आर सर्चिंग, एंड वो कौन सा एड्रेस में स्टार्ट हुआ है? सपोज इट इज स्टार्टिंग एट 1000. सो सपोज दिस इज 1000. So this value base will be 1000. And what is limit? Limit मतलब वो 1000 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? Suppose it is going from 1000 to 1400. Then this limit value will be 400. And base value will be 1000. Understood all of you? Yes sir. Okay. Now suppose I am trying to find, or my offset is 7. My offset should always be less than what? Can you tell me? My offset should be always less than what? Limit. Okay, my offset cannot be more than limit. So once I get this limit value, I compare that limit with this offset. If it is less, then what we will do? It should be less. If it is not, then there is a error. That is a trap. And if it is here, this error, and if it is greater or equal, then what will happen? हम लोग ये बेस में वो ऑफसेट को ऐड करेंगे. सो मतलब बेस इज 1000 प्लस 7, सो दैट इज दिस इज द 1007 का एड्रेस, और दिस इज द डाटा आई एम सर्चिंग फॉर. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, देखो ये एग्जांपल में देखो, सपोज मेरा करेंटली आई हैव 5 लॉजिकल यूनिट, सब रूटीन, स्टैक, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम एंड स्क्वायर रूट. तो हर एक का देखो बेस एड्रेस दिया है एंड लिमिट दिया है. बेस एड्रेस, लिमिट. ओके, सो यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1400. सेगमेंट 0 देखो, सेगमेंट 0 मतलब यहाँ पर देखना है 0 लोकेशन में, सेगमेंट टेबल में 0 लोकेशन में देखना है. तो सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस इज 1400. तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 1400 प्लस 1000, 2400 और 2400. ओके, सिमिलरली सेगमेंट 2 देखो, सेगमेंट 2 का बेस एड्रेस इज 6300 एंड 400 तक जाएगा. तो सेगमेंट 2 देखो 6300 कहाँ है? हाँ ये 402 जा रहा है. सॉरी, सेगमेंट 1, नॉट सेगमेंट 2, सेगमेंट 1. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? सर इसमें वापस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा? हाँ होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा. ओके, वी विल डिस्कस दैट. होगा, दैट प्रॉब्लम विल अराइज.
This concept you understood or not? Tell me. Yes, sir. Okay. Next एक problem देखते हैं. देखो suppose it is saying consider the following segment table. तो segment number दिया है 0 1 2 3 4 and base and length are stored. So it is asking what are the physical addresses for the following logical address. It is asking logical address इसका 0 4 3 0. 0 क्या है? 4 3 0 क्या है? 0 is the Zero base. base नहीं सीधा. Segment number. Segment number. So 0 is the 430 segment offset. number. 430 क्या है? Offset. Offset. So tell me what will be the address of this? 219 plus 430. हाँ. तो अच्छा ठीक है. So that is 219. Sorry. 219 plus 430. Next one. Tell me quickly. Two three 1 0. Next one will be 2310. Good. Next one. Hoboni. Hobon is, yes. Huh? कहाँ हो? Sir, Sir, length is smaller than offset. Trap. Ah, so trap. So now I think you have understood. So this will be the output. The third one you see, this is illegal reference trap to the operating system. Similarly, this one also illegal reference trap to the operating system. Understood? Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So one of the advantage of segmentation is association of protection with segments. मतलब segments को हम लोग एक ही ये दे सकते हैं, either read or write permission, whatever you can give it at a time. Protection is more natural at the logical level, such as sharing common procedures rather than sharing fixed pages. Okay, we can share the entire procedure. And in memory there will be some segments which contain only program instruction and some segments segments having data only. Suppose मान लो कि तुम लोग एक प्रोग्राम को 10 बार रन कर रहे हो. नॉर्मली वी डू दैट. जैसे ही हम लोग प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोग्राम को बार बार रन करते हैं. तो सपोज प्रोग्राम को एक बार रन कर दिया तो क्या हुआ, प्रोग्राम इज लोडेड. So program is one logical unit and its data. This data is another logical unit. Okay. So next time जब run करेंगे तो क्या होगा, program will be available because already it is there and this logical this data will be changed. So in memory there will be some segment which contain only program and some segment data. To protect the instruction segments, किसको हम लोग को protect करना है, तो read only देना है from the data segments. Normally हम लोग data we don't want to change. We don't want to change the program Instruction. instruction. We want to change the data. So to protect the data from the segments, we can attach one bit that is known as protection bit 0 1. So 0 suppose indicate करेगा only read and 1 indicate करेगा only write. So this is similar to the previous concept in paging. So sharing is another advantage, and segmentation are shared when entries in the segment table of two different processes point to the same physical location. This thing is similar to the paging, but here we get the benefit that one logical unit of a program will be stored in one place. अच्छा, drawback देखो. Drawback is using segmentation it is difficult to manage memory because we have to search a proper hole. Is this point understandable? तुम लोगों को जब पेजिंग कॉन्सेप्ट से पहले तुम लोग जो डायग्राम में बताया था कि अगर हम लोग को कोई पेज को रन करना है, सो वी आर सर्चिंग फॉर ए मेमोरी, तो व्हाट विल डू, वी विल सर्च फॉर ए होल ऑफ लार्जर साइज. बट इसमें फिर दो टाइप का होता है, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट. इट डिपेंड्स. तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो उसको अरेंज करके शॉर्ट ऑर्डर में रखना पड़ेगा. तो दैट प्रॉब्लम विल अगेन कम. एंड सेगमेंटेशन में कॉज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, व्हाटएवर you are saying or talking, this is there, you see. Okay. अच्छा, तुम लोग now there is a question.
if my segment size can be large, can be small, तो लार्ज होने से एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ज्यादा होगा या स्मॉल होने से एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ज्यादा होगा? स्मॉल होने से ना, स्मॉल होने से एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ज्यादा होगा। स्मॉल सेगमेंट अगर होंगे सर, तो स्मॉल मतलब प्रोसेस के कंपैरिजन में। नहीं नहीं नहीं, ମୁଁ Process ପଚାରୁଛି के जो size। ସେଗମେଣ୍ଟର ସାଇଜ, ଏଇ ଯୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ୟୁନିଟ ତ? यस सर। ମୁଁ ଧର ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିଛି ଯୋଉଥିରେ ମୋର ମେନ୍ ଟା ବଡ ବଡ ଅଛି, ତା ମାନେ ମୋର କ'ଣ ସେଗମେଣ୍ଟର ସାଇଜ ବଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମେନ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ସାଇଜର, ଓକେ, ସୋ ଦୋଜ ଆର୍ ସ୍ମଲର ସାଇଜେସ୍, ଓକେ, then in that case what will happen? In which case there will be more external fragmentation? Small size. स्मॉल ना सर। No, you see, if the size of the fragment will be large, then whenever a process will finish from the memory, there will be large holes. Yes, sir. ओह यस सर, हाँ यस सर। So what it is saying, you see, if the average segment size is small, then external fragmentation will also be small. देखो, this is a very good analogy which is given. तुम लोग को अगर you are going for a tour or you are going in a tour and you want to keep your suitcases inside your car dicky, तो suitcases में जो आइटम है उसको suitcases में नहीं रखोगे, डायरेक्टली उसको सूटकेसेस में से निकाल के डायरेक्टली डिक्की में रख दोगे। दिस इज वन वे। सेकेंड वे इज, ये सूटकेसेस जो है उसको डिक्की में डायरेक्टली यू विल पुट इट इनसाइड द डिक्की। तो कौन सा मेथड में सब आइटम आने का चांसेस ज्यादा है? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? मतलब पुटिंग सूटकेसेस इन ए कार डिक्की एंड पुटिंग इंडिविजुअल आइटम्स इन ए कार डिक्की, in which method you will be able to, or in which method there is a greater chance of storing all these items inside the car dicky? First method or second method? सेकंड सर, इंडिविजुअल। Second, sir. Second, sir. इंडिविजुअल। तो मतलब इंडिविजुअल मतलब क्या है? वो क्या किया हम लोगों ने, उसको साइज छोटा कर दिया, तो सेगमेंट साइज इज डिक्रीज, बट इन द फर्स्ट केस सेगमेंट साइज इज इंक्रीज। ओके, इज इट क्लियर? अरे yes or no? यस Yes, यस। sir. ये पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बीच में डिफरेंस मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड, and I have already given this slide. I don't want to read by myself, and there is nothing to explain you. I have already made you understand all these paging and segmentation points. So please go through by yourself and try to understand. Okay, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। देखो, ओवरऑल पेजिंग में क्या डिसएडवांटेज और लिमिटेशन है, एक लाइन में पूछूंगा तो क्या बताओ? पेजिंग में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, इंटरनल एंड सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। बट दोनों का एडवांटेजेस भी है। अरे दोनों Yes, का sir. एडवांटेजेस है कि नहीं? तो सेगमेंटेशन का एडवांटेज क्या है? एक लॉजिकल यूनिट एक प्लेस में मिल जाएगा, सो एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर। पेजिंग का क्या है? पेजिंग का हमेशा इसमें एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये दोनों को मिला देंगे, तो वी विल कंबाइन दीज टू टेक्निक्स and that is known as segmented paging. Okay, we'll see in the next class. I had a plan of finishing this entire module by this month, but I don't think it will finish. It will finish only this chapter will finish next class, segmented paging. But anyhow, we'll proceed in the same pace, but if required I may take 2-3 classes, 2 classes maximum. I will try to finish within your before 15th, but if not possible then we may take. Okay, roll number, एक minute, roll 6, 7, 8, 11, 15,
18, 20, 24, 30,  Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. do, do.